Hello everyone, as we have already completed two kingdoms of Whittaker's five kingdom system of classification, Monera and Pratista, we will today start with the third kingdom, that is fungi. So kingdom fungi differs a lot from Monera and Pratista. The major difference is that fungi have a mycelial form. They don't have a unicellular structure as in case of monerans and in case of protists. You might have seen those thread-like structures as shown in the upper picture growing on decaying surfaces at your home, like bread, like decaying wood logs. So these thread-like structures, they are the fungal body. These thread-like structures, they are called mycelia. So these mycelia, as you can see in the bottom picture, the mycelium, it is an organization of thread-like structures inside the fungal body. You can see the single thread like structure inside the mycelium, it is called hypha. If it is plural, then it is hyphae. If it is singular, then it is hypha. And these hyphae, they together constitute a mesh like structure which we call mycelium. So fungi, as we have already discussed, mostly they are mycelial. Mycelium is a mesh like structure which is formed by threads which are called hyphae. So it is the mycelial form which is present in most of the fungi. However, a few fungi, as I can recall, only a single fungus, that is yeast, which has unicellular form. So only yeasts are such fungi which have unicellular structure. Rest of the fungi, they have mycelial forms, that is the mesh-like structure which is formed by hyphae of fungi. So mycelium can either be septate or it can be aseptate. Now, what do these two terms mean? Septate. Septa means division. Septate means the one with divisions, and aseptate means the one without divisions. So, in case of septate mycelium, what happens is the hyphae, the cells in the hyphae, they are divided by cell walls. They have proper septa between them, right? Whereas in case of aseptate mycelial forms, there are no divisions among the cells. Multiple nuclei, they are suspended in the hyphae, and there are no septae, there are no divisions. You cannot count on the number of cells present. Cenocytic, ceno means fused, cytic means cells. So you can say a single fused cell is present which has multiple nuclei, and there are no septa present. So some of the fungi we will be studying later, they will have septate hyphae, some of them will have aseptate hyphae. So here are some general characters of fungi. Fungi have no chlorophyll. No chlorophyll means no photosynthesis. No chlorophyll, no other photosynthetic pigments present. They do not synthesize their own organic material as food. So what will they do? They will have to acquire nutrition from outside. Such organisms which acquire nutrition from outer sources, they are called heterotrophic. Now that outer source can either be a living organism or it can be a non-living material. In case the fungus is acquiring its nutrition from a living organism, in that case the fungus is called a parasite. Whereas if the fungus is acquiring nutrition from non-living material, in that case fungus will be called a saprotroph. So can you recall some parasitic fungi? Like if you would have heard about ring fungi, right? Those fungi which cause skin infections in humans. So those fungi, they are examples of parasitic fungi. They are parasites on us. The saprotrophic fungi, if you can recall, bread molds. So where are they acquiring the nutrition from? They are acquiring the nutrition from bread. Bread is a non-living material. So those types of fungi, they are saprotrophs. Another characteristic feature of fungi is the presence of chitin in their cell walls. Their cell walls are not made up of cellulose. Their cell walls are made up of chitin. Coming to reproduction in fungi. Reproduction in fungi can occur either by vegetative means
or by asexual means or by sexual means. If you can recall, in case of monerans, the reproduction it occurred mainly by asexual means. It is only in very rarely that some sexual means like transformation, transduction, conjugation they are adopted. So in case of protistans, if you can recall, both asexual and sexual means were adopted. In case of fungi, three modes of reproduction are there: vegetative, asexual, and sexual. Now, what is the basic difference between these three modes? Vegetative reproduction is the reproduction in which no special cells, no special structures for reproduction are formed. The vegetative cells or the somatic cells are involved in reproduction. Soma means body. Soma means body. So those cells which are constituting the body of the fungus, they themselves get involved in reproduction. No special cells are formed. Whereas in case of asexual reproduction, special reproductive cells are formed, though these special reproductive cells are not gametes. So in asexual reproduction, what are those special reproductive cells? They are the spore forming structures, the spores, right? The sporangia and the spores, they are reproductive structures, but no gametes are formed. Whereas sexual reproduction is that reproduction in which special gametes are formed for the purpose of reproduction, and the male and female gametes, you can say the gametes from two different fungal strains, they combine with each other in order to give rise to a progeny, in order to give rise to a fungal offspring, which is you can say having different characters from the parents because of recombination that will be occurring. So vegetative reproduction occurs by three basic means: fragmentation, budding, and fission. Fragmentation means that the hyphal cells they will break among themselves. हाइफा बीच में से टूट जाएगा, कुछ जो है दो तीन सेल्स, जो कुछ नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे, वो अपना अलग से माइसीलियम फॉर्म कर लेते हैं. बडिंग यू माइट हैव सीन इन यीस्ट, माइट हैव स्टडीड दिस इन लोअर क्लासेस. जैसे यीस्ट में बडिंग होती है, एक बड फॉर्मेशन होती है, फिर वो जो बड है उसकी कंप्लीटली कंस्ट्रक्शन हो जाती है एंड वो सेपरेट हो जाता है जो पेरेंट सेल है उससे, एंड इट गिव्स राइज टू अनदर सेल. दैट इज एक सेल जो है उसमें बड फॉर्म हुई और वो जो बड है वो एक अलग से फुली डेवलप्ड सेल फॉर्म कर लेता है, तो दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं. फिशन में क्या होता है, अगेन जो सेल है वो सेंटर में से कंस्ट्रिक्ट होके, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगी, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगी, सेंटर में से कंस्ट्रिक्ट होके एंड दो जो हैं सेल्स वो फॉर्म हो जाते हैं. So these were vegetative means of reproduction. Next we'll be studying asexual means of reproduction. So these are various spores which are produced in asexual reproduction. So four types of spores are there: zoospores, sporangiospores, chlamydospores, and conidia. I would like to define a term here: spore. What basically is a spore? Spores जो हैं, they are structures which will be ultimately germinating under favorable conditions to give rise to mycelium. ऐसा नहीं है कि spores they are formed only in asexual reproduction. In sexual reproduction also we will see spores are formed. लेकिन difference है, क्या difference है? In asexual reproduction these spores they are formed by mitosis. जो हाइफल सेल्स थे उनसे ही माइटोसिस होकर के जो है स्पोर्स की फॉर्मेशन हो गई. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आफ्टर द गमीट्स दे हैव फ्यूज्ड, आफ्टर द zygote is formed, from that zygote in some way the hypha which is produced from that zygote, it will then generate the spores. So those spores they have been generated after recombination has taken place. They are not going to generate a mycelium which is very genetically identical to the parent. That kind of spore which has been produced after zygotic meiosis, that kind of spore will be giving rise to mycelium which has a varied characteristics or genotype as compared to the parent mycelium. तो स्पोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनको हम माइटोस्पोर्स नहीं बोल सकते. जो स्पोर्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होते हैं दे आर कॉल्ड माइटोस्पोर्स, whereas those spores which are produced in sexual reproduction they are produced by zygotic meiosis, so हम उनको माइटोस्पोर्स नहीं बोल सकते. Those spores also
एंड दीज स्पोर्स ऑल्सो अल्टीमेटली ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करके नए माइसीलियम को ओरिजिनेट करते हैं. So there are 4 types of spores which are produced in our sexual reproduction. One are zoospores, then are sporangiospores, then we have chlamydospores and conidia. So basically how are spores formed? If you can see at the extreme left of the board, हाइफी की जो टिप है वहाँ पे सारा का सारा जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था वो ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट हो गया है. वो टिप स्वेल हो जाती है, उस टिप में कुछ जो है स्पेशलाइजेशंस होती हैं एंड वो टिप जो है वो स्वेल होकर के एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं. स्पोरेंजियम कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट राउंडेड स्ट्रक्चर, या जैसे जूस्पोरेंजियम थोड़ा इलोंगेटेड होता है तो वो जो है थोड़ी सी एक स्वेलिंग होती है हाइफी की टिप के ऊपर जहाँ पे हाइफी का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो गया है, उसके जो न्यूक्लियाई हैं वो कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं. वहाँ पे उस स्पोरेंजियम के अंदर, उस स्वोलन पोर्शन के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. क्योंकि उसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम उसको स्पोरेंजियम बोल देते हैं. और उसके अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, जैसे उसके अंदर अब स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होने वाले 2 स्पोर्स होते हैं. वन आर जूस्पोर्स एंड द अदर आर स्पोरेंजियोस्पोर्स. Chlamydospores and conidia are not produced inside sporangia. They are produced directly from the hyphal cells. So zoospores and sporangiospores जो हैं, they are the only spores which are produced inside the sporangium. अब zoospores जो हैं, they have a very special characteristic. They are motile. Whereas the rest of spores, sporangiospores, chlamydospores, conidia, they are all non-motile. तो zoospores जो हैं, how are they motile? They have flagella. The structure which you can see under the heading of zoospores, that oblong structure, it contains small spores. So those spores, by the time they are dispersed, they have 2 flagella. So by the time they are dispersed, they have 2 flagella. So these flagella, they help the zoospores to swim actively in water. So zoospores, because they have flagella, they will be dispersed by water. They will be able to actively swim in water. This type of motile flagellated zoospores are formed in lower kind of fungi, phycomycetes, which we'll be studying in this later. So the structure inside which these spores are produced is called zoosporangium. The spores are called zoospores. They are motile, they are flagellated, and they are dispersed by water because they can actively swim in water. Then we have sporangiospores. Sporangiospores are produced inside a structure called sporangium, which is born at the tip of a hyphal branch which we call sporangiophore. तो बेसिकली स्पोरेंजियोफोर कुछ नहीं है, हाइफा की एक ब्रांच है, फंगल बॉडी में से एक ब्रांच निकलती है, उसको हम स्पोरेंजियोफोर बोल देते हैं. वो ब्रांच की टिप के ऊपर जो है स्वेल होके कुछ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, वहाँ पे जो है स्पोरेंजियम फॉर्म हो जाते हैं. इनसाइड दैट स्पोरेंजियम स्पोरेंजियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, बट these sporangiospores are different from zoospores in the sense that they don't have flagella. So if they don't have flagella, they cannot be dispersed by water. What will happen is nature will come into play, and these spores, they will be dispersed by means of wind. They will be dispersed passively by wind, and wherever they will land in favorable conditions, they will germinate to produce a new mycelium. As we have already seen, zoospores and sporangiospores, they are produced inside specialized structures which are called sporangia. However, the other 2 types of spores, chlamydospores and conidia, they are not produced inside sporangia. The chlamydospores, they are produced from the hyphal cells only. If you can see, chlamydospores में जैसे एक hypha है, तो उसके जो कुछ cells हैं, they will thicken their walls and they will store reserve food material so that they can endure unfavorable conditions, and they will germinate when those unfavorable conditions are replaced by favorable conditions in order to produce a new mycelium. तो कुछ नहीं है, क्लेमाइडोस्पोर्स की जो कुछ सेल्स होते हैं हाइफी के, वो क्या करते हैं, अपनी सेल वॉल्स को थिकन कर लेते हैं एंड दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस में अगर उनको कहीं बाहर से फूड नहीं मिल पाता है, दे विल बी एबल टू सर्वाइव
on the basis of or with the help of that food material which is stored inside the cell. तो ultimately जब unfavorable conditions चली जाएंगी, favorable conditions आ जाएंगी, these chlamydospores they will be liberated and they will be germinating in order to produce new mycelium. Then we have conidia. Conidia, they are again they are produced directly from the hyphal branches. हाइफा जो है उसमें से एक स्पेशल ब्रांच निकलती है, उसको हम कोनिडियोफोर बोलते हैं. कोनिडियोफोर का मतलब होता है स्ट्रक्चर विच इज बियरिंग द कोनिडिया. तो कोनिडियोफोर के ऊपर जो है आप देख सकते हैं उस ब्रांच के ऊपर कोनिडिया फॉर्म होते हैं. These are non-motile spores. Again, they are non-motile. They are produced singly or in chains. अकेले भी एक कोनिडिया भी बन सकता है, एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं, और अगर एक से ज़्यादा होते हैं they are present in a chain at the tip of special hyphal branches which we call conidiophores. Conidiophore की टिप पे फॉर्म होते हैं. They are produced exogenously. Exogenously in the sense कि they are not produced inside any special sporangium and they are dispersed by wind and germinate directly by giving out germ tubes. कोनिडियोफोर के अंदर जो है हाइफा से एक ब्रांच निकली जिसको हम कोनिडियोफोर बोलते हैं. उस कोनिडियोफोर की टिप पे जो है कंस्ट्रक्शंस होके डिविजन्स होती हैं जिससे कोनिडिया फॉर्म होते हैं. ये जो स्पोर्स हैं ये विंड के थ्रू डिस्पर्स होते हैं एंड दे जर्मिनेट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस न्यू mycelium. So these were the 4 types of spores that we have studied. Zoospores, they were only motile spores, and sporangiospores, chlamydospores in conidia, they are non-motile. Zoospores are dispersed by water. They can actually swim in water. Sporangiospores in conidia, they are dispersed by wind. Chlamydospores are resting spores. They are not they do not need to travel. Actually, it is when the fungus is facing some unfavorable conditions, these spores are formed. These spores will be able to endure those conditions and they will be germinating at that very place. Actually, chlamydospores are not true spores. They are just hyphal cells. They are just hyphal cells which are behaving like spores. Then we have sexual reproduction. Sexual reproduction occurs in all the groups of fungi except Deuteromycetes. We will be studying various groups of fungi: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes. So sexual reproduction occurs in all groups of fungi, but it does not occur in Deuteromycetes. There are basically 3 phases of sexual reproduction. First is plasmogamy, then is karyogamy, and then is meiosis. Plasmogamy. Gamy means fusion. Plasmo means the protoplasm. That is the protoplasms of the 2 fungi, the fungal hyphae, they will fuse. However, the nucleus has not yet fused, so it is a binucleate mass of protoplasm. Karyogamy में क्या होता है? The 2 nuclei fuse in order to give rise to a single uninucleate mass or hypha. Then we have meiosis, जिसमें ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है जिसमें 2 न्यूक्लियाई फ्यूज करके एक न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है, अब उसमें मियोसिस होगी, उस न्यूक्लियस में मियोसिस होगी and 4 spores will be produced. So basically you can see spores are being produced in sexual reproduction. कौन से स्पोर्स होते हैं यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होते हैं? oospores, ascospores, basidiospores, डिपेंडिंग ऑन कौन सी फंगस है, अलग अलग फंजाई में अलग अलग टाइप के स्पोर्स फॉर्म होते हैं. तो वी विल रिकॉल प्लाज्मोगेमी में क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन हो चुकी है लेकिन कैरियोगेमी नहीं हुई, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुई. कैरियोगेमी में क्या होता है? 2 न्यूक्लियाई जो हैं दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं, दे फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस. मियोसिस में क्या होता है? वो जो न्यूक्लियस है जो कि डिप्लॉयड है उसमें अब मियोसिस होगी. मियोसिस होकर के स्पोर्स फॉर्म होंगे, oospores, ascospores, basidiospores, जिनसे अल्टीमेटली माइसीलियम फॉर्म होगा. So in this we will be studying the various modes of sexual reproduction. The first mode is planogametic copulation. Then we have gametangial contact. Then we have gametangial copulation. Then we have spermatization, and then is somatogamy.
तो we'll first of all come to planogametic copulation. Planogametic copulation क्या होती है? First of all, planogametes क्या होते हैं? Motile flagellated gametes are called planogametes. So if the sexual reproduction is taking place by fusion of two motile flagellated gametes, it is called planogametic copulation. This planogametic copulation can be of three types: isoplanogametic, anisoplanogamitic or ooplanogametic. What happens is, in case of isoplanogametic copulation, जो है these two spores which are fusing, they are identical. That is, the male and female gametes, they are both motile and they are similar in size. If they are both motile and similar in size, it is called isoplanogametic copulation. However, if the female gamete and male gamete, they are both motile, but the female gamete is quite larger in size as compared to the male gamete, then it is called anisoplanogamitic copulation. However, in some cases, what happens is, the female gamete, it is quite larger in size and it is non-motile. That is, it has not been able to travel on its own. It does not have flagella. It is not motile. It is suspended on the structure where it was produced. जहाँ पे produce हुआ था वहीं पे जो है सस्पेंड हुआ है, कहीं मूव नहीं किया. तो ये जो लार्जर फीमेल गमीट है जो नॉन मोटाइल है, इट विल फ्यूज विद द मोटाइल मच स्मॉलर मेल गमीट. दिस काइंड ऑफ प्लेनोगमेटिक कॉपुलेशन इज कॉल्ड ooplanogametic copulation. तो you need to correct the second diagram where I have by mistake mentioned the male gamete to be non-motile. It is not the case. In anisoplanogamitic copulation, both male and female gametes, they are motile. Please correct it. In isoplanogamitic copulation, both of them are motile and they are same size. In anisoplanogamitic copulation, the female gamete is also motile, male gamete is also motile, but the female gamete is much larger in size as compared to the male gamete. Whereas in ooplanogametic copulation, the female gamete is non-motile and the male gamete is motile and much smaller in size as compared to the female gamete, and there this kind of planogametic copulation is called ooplanogametic copulation. Now we'll be studying the second kind of sexual reproduction, that is gametangial contact. So now coming to the second mode of sexual reproduction, that is gametangial contact. Gametangium. What is gametangium? Gametangium is the structure inside which the gametes are produced. Gametangium कुछ नहीं होता है. हाइफी जो होती हैं फंगस के, उसमें से कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस निकलते हैं जिनकी टिप्स पर ये गेमेटेंजिया फॉर्म होते हैं. गेमेटेंजियम एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गेमीट्स प्रेजेंट होते हैं. तो अगर मेल गेमीट्स प्रेजेंट है तो हम उसको मेल गेमेटेंजियम बोलेंगे या एंथ्रीडियम बोलेंगे, और अगर फीमेल गेमीट्स प्रेजेंट है तो हम उसको मोस्ट ऑफ द केसेस में ooगोनियम बोलेंगे या फीमेल गेमेटेंजियम बोलेंगे. तो गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट क्या है कि जो दो गेमेटेंजिया हैं वो आपस में दे कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट. वी विल बी सीइंग इट. सी इन दिस डायग्राम अंडर गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट यू कैन सी एंथ्रीडियम और ooगोनियम जो है वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, फ्यूज नहीं कर रहे हैं. They are just coming in contact with each other, and a fertilization tube is formed inside antheridium which transfers the male gametes from antheridium to oogonium, and inside the oogonium the male and female gametes, they will be fusing in order to give rise to zygote, which is diploid, right? So the gametangia, they only came in contact with each other, they didn't fuse. Then we have gametangial copulation. In case of gametangial copulation, what happens is, you can see in the first diagram, two hyphae, they were in close contact with each other. ठीक है. So what happened was, उन जो दो hyphae थी which were in close contact with each other, उनकी जो tips थी वो specialize करके क्या form कर लेती हैं, gametangia form कर लेती हैं. You can say one was plus fungal strain, the other was minus fungal strain. Fungus की कुछ strains होती हैं, we are not to discuss that in detail. कुछ स्ट्रेन्स जो होती हैं हम उनको प्लस स्ट्रेन्स बोलते हैं, कुछ को हम माइनस स्ट्रेन्स बोलते हैं. तो प्लस और माइनस स्ट्रेन्स में फ्यूजन होती है. सो व्हाट हैपेंस इज, हाइफी जो हैं दे कम इन क्लोज कांटेक्ट विद ईच अदर. उन हाइफी की टिप पे गेमेटेंजिया फॉर्म होते हैं. उन गेमेटेंजिया की जो है फ्यूजन होती है. दे आर नॉट जस्ट कमिंग इन कॉन्टैक्ट, दे आर फ्यूजिंग विद ईच अदर. उस फ्यूजन को हम कॉप्यूलेशन बोलते हैं, और उस फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम जाइगोस्पोर बोलते हैं. जाइगोस्पोर इज द
diploid structure which is formed by fusion of the two gametangia. You can see planogametic copulation. Copulation means fusion. The two gametes fused with each other in order to result into a zygote. Gametangial contact. There was no copulation, there was no fusion. That is, they only came in contact with each other and radial contents were transferred to oogonium via the fertilization tube, after which oospore, which is the zygote, which is the diploid structure, was formed. In case of gametangial contact, the zygote is called oospore. Then we have gametangial copulation. That is, the two gametangia, they actually fuse with each other in order to result into the diploid structure, which is called zygospore. These are the other two methods of sexual reproduction. First is spermatization and the second is somatogamy. तो spermatization में क्या होता है, छोटे छोटे से यूनिन्यूक्लियेट स्पोर्स जिनको हम स्पर्मेशिया बोलते हैं. स्पर्मेशिया इंडिकेट्स दैट दे आर द मेल स्पोर्स. तो मेल जो हाइफल ब्रांचेस होती हैं उनकी टिप के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे से यूनिन्यूक्लियेट स्पोर फॉर्म होते हैं जिनको हम स्पर्मेशिया बोलते हैं. They are transferred through various agencies to the receptive hyphae or the trichogyny of female gametangium. What happens is these spermatia, they are the male spores which are produced at the tip of male hyphal branches and they are transferred by various agencies, wind से या किसी भी तरीके से, they are transferred to the female reproductive part, that is ascogonium, जिसकी जो neck है, ascogonium is the structure जिसके अंदर female spores जो हैं वो present हैं, and it has a रिसेप्टिव स्ट्रक्चर, एक उसका जो है नेक लाइक स्ट्रक्चर है विच इज़ कॉल्ड ट्राइकोगाइनी. उस ट्राइकोगाइनी के साथ जो है स्पर्मेशिया कॉन्टैक्ट में आते हैं एंड द कंटेंट्स ऑफ स्पर्मेशिया दे आर ट्रांसफर्ड इनटू trichogony where these contents they travel downwards and the male gametes and female gametes they fuse with each other so that zygotic structure is formed. Then we have somatogamy. So as the name indicates, somatogamy क्या होती है, soma body, no special gametes were formed. Okay, no special gametes were formed. लेकिन हम इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं रखेंगे क्योंकि जो प्लस और माइनस स्ट्रेन के जो हाइफी हैं, अलग अलग जो हाइफी हैं, फंगाई के हाइफी हैं, दे आर फ्यूजिंग विद ईच अदर in order to form the dikaryotic hypha. So what happens is the fungus of plus strain and a fungus of minus strain, they come in contact with each other and they fuse. You can see at the point of fusion a single cell is having two nuclei. So plasmogamy has taken place but karyogamy has not yet taken place. This is the case with most of the higher fungi. लोअर फंजाई में क्या होता है, प्लाज्मोगेमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगेमी. जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाते हैं इमीडिएटली उसके बाद न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं एंड मियोसिस होकर स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं. लेकिन हायर फंजाई में ऐसा नहीं होता. हायर फंजाई में क्या होता है, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज नहीं होते हैं एंड दिस डाइकैरियोटिक सेल विच इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन, अब वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा एंड विल गिव राइज टू अ डाइकैरियोटिक हाइफा जिसके हर एक सेल में दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. So this type of dikaryotic phase is noticed in higher fungi. It is not noticed in lower fungi. So these are the various modes of sexual reproduction. Now coming to the classification of fungi. Basically, fungi are divided into four groups. First is phycomycetes, then is ascomycetes, then we have basidiomycetes and deuteromycetes. Right, so phyco means alga. So phycomycetes are basically, they are called algal fungi. They resemble algae a lot. They are called algal fungi. The bread molds that you see, the white bread mold that is mucor and the black bread mold that is rhizopus, both the bread molds they belong to phycomycetes. Another fungus called albugo, which is parasitic on mustard plant, is also a member of phycomycetes. Then we have ascomycetes. Ascomycetes are called sac fungi because of the structure of their fruiting body, that is ascus, which is sac shaped in structure. We will be seeing that later on. Aspergillus and penicillium, the green colored fungus which you see, most common fungus you will see around you. Aspergillus, it belongs to ascomycetes. Then we have basidiomycetes, club fungi. Again, the basidium, that is the club shaped structure. They have a fruiting body which is club shaped
and it bears the spores, the basidiospores. That is why they are called club fungi. Mushrooms, like mushrooms, bracket fungi, puff balls, they belong to this basidiomycetes. And major plant pathogens, Astillego, which causes rust diseases in plants, and Puccinia, which causes smut diseases in plants, they both belong to basidiomycetes. We'll see what rust and smut is. We'll be coming to that later. Then we have deuteromycetes, which are called imperfect fungi. They are called imperfect fungi because no sexual reproduction takes place in this deuteromycetes. So they are called imperfect fungi. Alternaria, Cladotrichum, Trichoderma, again major plant pathogens, they belong to deuteromycetes. So coming to the first group of fungi, we'll be discussing phycomycetes. Algal fungi. These fungi, they are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places, or as obligate parasites on plants. Obligate means they cannot survive if they do not find the plant on which they are parasitic. That is, they won't be able to survive without that plant. The mycelium is aseptate and cenocytic. That is, the mycelium does not have any septae. The mycelium has fused cells. The multinucleate protoplasm is present in the entire mycelium. No septae are present. Asexual reproduction takes place by zoospores or by aplanospores, that is, non-motile spores. And the spores are endogenously produced inside a sporangium. So it means that chlamydospores and conidia are not found in these kind of fungi. A zygospore is found by fusion of two gametes. The structure which is found by fusion of two gametes is called zygospore. If you can recall, we have seen what zygospore is in case of gametangial copulation. So we can see in case of phycomycetes, gametangial copulation takes place mostly and zygospore is formed by fusion of two gametes. These gametes which form zygospore by fusion, they are similar in morphology or they can be dissimilar. That is, it can be isogamous type of fusion or it can be anisogamous or oogamous. We have studied these terms and they should be pretty clear to you by now. Some common examples of phycomycetes are bread molds. The Mucor rhizopus. Mucor is the white bread mold. Rhizopus is the black bread mold. You can see them in pictures. And albugo, which is parasitic on mustard. So this is the general life cycle of a phycomycete. I don't want you to memorize it. It is not meant to be memorized. What I want you to see in this is the general life cycle of a fungus, life cycle of a phycomycete. We'll be moving in clockwise direction from the second figure. 1b, the hyphae of plus and minus mating types, they grow towards each other. As we had already seen gametangial copulation type, gametangia are formed. Those gametangia fuse in order to give rise to a zygospore. This zygospore will be giving rise to a sporangium at the tip of a special branch which is called sporangiospore. And this sporangium, it will be giving rise to spores which will ultimately generate in order to form the fungal mycelium. So spores are produced by asexual reproduction also. Spores are produced by sexual reproduction also. Ultimately, it is the spore which will be germinating in order to give rise to the mycelium. Right. But what is the difference here? After the zygospore was formed, meiosis, it took place inside the zygospore and those spores, they were formed. So the spores which are formed from zygospore, the spores which are formed by sexual reproduction, they are formed by meiosis, whereas the spores formed in a sexual reproduction are formed by mitosis. As you can see, phycomycetes are lower fungi. There is no dikaryotic phase that you can see in this life cycle. Then we have ascomycetes, which are commonly known as sac fungi because of the structure of their fruiting body, ascus, which is sac shaped. They are mostly multicellular like penicillium or rarely unicellular. Penicillium and Saccharomyces should have been in italics. Then we have yeast, which is the only unicellular fungus. It belongs to ascomycetes. They are saprophytic, they are decomposers, parasitic or coprophilous. Coprophilous means they can grow on dung. The mycelium is branched and septate. So you can see penicillium, which is the major antibiotic producing fungus. It belongs to ascomycetes and the only unicellular fungus.
which we know is yeast that belongs to this Ascomycete group. Yeast, scientific name of yeast is Saccharomyces. So yeast and penicillium, they belong to Ascomycetes. These kind of fungi, they can be saprophytic, they can be decomposers, they can be parasitic, or they can be coprophilous, that is they can grow on dung. So mycelium is branched and septate. Asexual spores are conidia. So in this Ascomycetes, conidia, they are produced in case of asexual reproduction. In sexual spores, they are called ascospores, which are produced in sac like asci. Singular form of asci is ascus. We'll be seeing what this ascus is. For example, other examples of fungi belonging to this Ascomycetes, they are Aspergillus, the green fungus that you see everywhere. Then we have Claviceps and Neurospora. If you have heard, Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. Like there is a fruit fly that's called Drosophila. If you've studied it, Drosophila is used in genetic analysis, and this Neurospora, it is equally, it has been used extensively in biochemical and genetic work. So sometimes in some books they refer Neurospora as Drosophila of plant kingdom, but I won't be mentioning with it this over here because I don't agree with this. Neurospora is a fungus, it does not belong to plant kingdom. So in some books they refer to Neurospora as the Drosophila of plant kingdom. I won't be mentioning that here. Then we have morels and buffels. Morels and buffels, they are edible fungi which belong to Ascomycetes. You can see the pictures of morels and buffels they are given. Now this is the general life cycle of an Ascomycete. Again, please don't memorize it. This is just for reference purposes so that you can understand how exactly fungi reproduce. So this is the life cycle of an Ascomycete. I want you to start from figure 1, where haploid mycelia of opposite mating types, they produce cenocytic sexual hyphae. That is, the hyphae in this kind of fungi, they are cenocytic, they are aseptate. These haploid mycelia, so what is happening is haploid mycelia, they produce cenocytic sexual hyphae. So you can recall this type of sexual reproduction in which hyphae, the vegetative hyphae, they are fusing with each other. This kind of sexual reproduction is called somatogamy. So the diagram is showing somatogamy is taking place. So what happens is, in first figure plasmogamy is taking place. Then you can see in third figure uh, plasmogamy took place, but the karyogamy did not take place. That is, nuclear fission was not there. So diploid structure, which was formed by fusion of the this protoplasm, so that two nuclei, those two nuclei, they're present in single cell. That cell with two nuclei, it will divide in order to give rise to dikaryotic hyphae. If you can see third figure में जो है, जो सेल था जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, वो डिवाइड करके इट गिव राइज टू डाइकैरियोटिक हाइफी. उसने पूरा का पूरा जो हाइफा है वो डाइकैरियोटिक जो है हाइफा जनरेट किया. तो नॉर्मली फंगल जो हाइफा होता है उसमें अगर वो सेप्टेट है तो उसमें एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो दो हाइफी थे वो फ्यूज करे, लेकिन उनके जो सेल्स का जो न्यूक्लियाई थे वो फ्यूज नहीं किए. तो वो जो दो न्यूक्लियाई वाला जो सेल फॉर्म हुआ था, उसने आगे डिवाइड करके एक डाइकैरियोटिक हाइफा को जनरेट किया. वो जो डाइकैरियोटिक हाइफा है उसके ऊपर जो है फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म होती हैं जिसको हम एस्कोकार्प बोलते हैं. एस्कोकार्प इज नथिंग, इट इज द फ्रूटिंग बॉडी. जैसे प्लांट्स के फ्रूट्स होते हैं, आप समझ सकते हैं फंगस का फ्रूट है, ठीक है. तो ये जो एस्कोकार्प है, इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं छोटी छोटी सी ब्रांचेस, दे आर विजिबल. वो ब्रांचेस क्या हैं, उन ब्रांचेस के टिप्स के ऊपर जो है एस्कस फॉर्म होता है. एस्कस क्या है, वो एक तरह का स्पोरेंजियम है जिसके अंदर क्या फॉर्म होते हैं, एस्कोस्पोर्स फॉर्म होते हैं. यू कैन सी दिस इज द एस्कोकार्प in the figure next to fourth figure. At the bottom you can see ascocarp is visible. उस ascocarp की जो छोटी छोटी सी branches हैं उस फ्रूट के अंदर, उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, उन ब्रांचेस के टिप्स पे क्या फॉर्म होते हैं, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं जिनको हम एस्काई बोलते हैं. उन एस्काई के अंदर जो है क्या फॉर्म होते हैं, एस्कोस्पोर्स. एस्कोस्पोर कैसे फॉर्म हुआ, जब एस्कोकार्प की फॉर्मेशन हुई तो एस्कोकार्प की जो ब्रांचेस हैं उनकी जो टिप है उस पर सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ जिसको हम एस्कस बोलते हैं. वंस द एस्कस हैज़ बिन फॉर्म्ड, तो उसके अंदर क्या होता है, जो दो न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं.
उन दो न्यूक्लियर के फ्यूज करने के बाद, दो न्यूक्लियर की फ्यूजन के बाद मियोसिस होकर के क्या बनते हैं, एस्कोस्पोर्स बनते हैं। तो एस्कोस्पोर्स दे आर हैप्लॉइड, और वो एस्कोस्पोर्स जो हैं वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, वो लिबरेट होते हैं फंगल स्ट्रक्चर में से, एंड दे जर्मिनेट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फंगल हाइफा. So I don't want you to memorize it at all. I just want you to memorize the characteristic features of phycomycetes, ascomycetes, basidiomycetes, and deuteromycetes. This is just in order that you can understand how asexual and sexual reproduction is taking place. Then we have basidiomycetes. So in case of ascomycetes, the fruiting body was ascocarp. The sac-like structure, the sporangium which bore sexual spores, was ascus, and the spores produced inside were called ascospores. Whereas in case of basidiomycetes, the fruiting body is basidiocarp. Inside the basidiocarp, special branches are born, at the tip of which are present basidia. These basidia, they are club-shaped sporangia inside which basidiospores are present. So basidiomycetes is the group of puffballs, mushrooms, and bracket fungi. So you're quite familiar with mushrooms if you can relate. Mushrooms जो होते हैं वो basidiomycetes होते हैं. So if you can see in the diagram, they've shown the basic structure of mushroom. तो वो जो structure हम देखते हैं, जो mushroom का structure visible है in the diagram also, जो mushroom itself, that is the basidiocarp. वो जो क्लब शेप जो स्ट्रक्चर है उसको हम बेसिडियोकार्प बोलते हैं. वो पूरी की पूरी फ्रूटिंग बॉडी होती है मशरूम की, जो एडिबल होती है, दैट इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प. तो दे ग्रो इन सॉइल, दे ग्रो ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स, दैट इज एज रस्ट एंड स्मट्स. जो रस्ट एंड स्मट्स हैं, दे बिलोंग टू बेसिडियोमाइसीट्स. ठीक है. रस्ट क्या होता है बेसिकली, आपने देखा होगा कई प्लांट्स के ऊपर ब्राउन कलर का जो है डिसकलरेशन सी नज़र आती है. जैसे हम बोलते हैं ना, वी कैन आइडेंटिफाई कि इस प्लांट को कुछ डिजीज़ है. तो जो ब्राउन ब्राउन सी मार्किंग्स होती हैं कुछ प्लांट्स के ऊपर, दे आर बिकॉज ऑफ दीज फंजाई, जिनको हम रस्ट बोलते हैं. देन वी हैव स्मट्स. स्मट्स क्या होते हैं, कुछ स्पोर्स जो होते हैं दे प्रोड्यूस ब्लैक कलरेशन. उनके जो रस्ट हैं उनके स्पोर्स ब्राउन कलर के होते हैं. तो जब वो इन्फेक्शन करते हैं किसी प्लांट के सरफेस के ऊपर, तो हमें उस प्लांट के सरफेस पे ब्राउन कलरेशन दिखाई देती है. वो कलरेशन क्या है, एक्चुअली वो उस रस्ट फंगस के स्पोर्स हैं ब्राउन कलर के. और जो स्मट होते हैं वो क्या होते हैं, कभी कभी प्लांट के ऊपर जो है ब्लैक मार्किंग्स नज़र आती हैं. वो ब्लैक मार्किंग्स क्या होती हैं, वो फंगस होती है, स्मट फंगस होती है. उस फंगस के ब्लैक कलर के स्पोर्स हमें नज़र आते हैं जब वो प्लांट के अंदर इन्फेक्शन प्रेजेंट होती है. तो बेसिडियोमाइसीट्स, दे हैव ब्रांच्ड एंड सेप्टेट माइसीलियम. These organisms, they do not have sex organs, but plasmogamy takes place by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. तो इसमें सोमेटोगैमी हो रही है, वेजिटेटिव सेल्स जो है वो फ्यूज कर रहे हैं. The resultant structure is dikaryon, which will immediately it will give rise to basidium. बेसिडियम क्या है, बेसिडियम इसका जो है वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो फॉर्म होंगे. ठीक है. तो बेसिडियम क्या है, बेसिडियम वो स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा जो है बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे. विल बी सीइंग द लाइफ साइकिल फॉर रेफरेंस. Karyogamy and meiosis take place in basidium, producing 4 basidiospores. The basidiospores are exogenously produced on basidium. We will see this also. Basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarps. आप देख सकते हैं डायग्राम में. Basidiocarp is the fruiting body. जो मशरूम का जो edible part है जो हमें visible होता है, that is the fruiting body of mushroom. उस बेसिडियोकार्प के जो बॉटम स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे छोटे छोटे से जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, बेसिडिया प्रेजेंट होते हैं, जिनके ऊपर बेसिडियो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. सम कॉमन मेंबर्स आर एगेरिकस, विच इज़ अ मशरूम, अस्टिलेगो, which is a smut, it causes smut diseases, and Puccinia, which is the rust fungus. So this is the basic distinction. I wanted to distinguish between ascospores and basidiospores. So ascospores, they are produced endogenously inside the ascus. Okay, they are formed inside the ascus, which is a sac-shaped structure. तो ascus के अंदर ascospores produce करते हैं ये जो होते हैं ascomycetes.
तो whereas in case of basidiomycetes क्या होता है, basidium एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसकी टिप के ऊपर, बेसिडियम के अंदर स्पोर्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं, बेसिडियम की टिप के ऊपर जो है बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल देम एक्सोजीनस, बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर एस्कोस्पोर की तरह अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते तो हम उसको बोलते हैं एंडोजीनस, राइट। दिस इज द जनरल लाइफ साइकिल ऑफ अ बेसिडियोमाइसीट एज वी हैव स्टडीड। अब फर्स्ट जो है डायग्राम देख सकते हैं, वी विल बी गोइंग क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट जहाँ पे मार्क किया हुआ है वहाँ पे आप देखें जो दो माइसीलिया थे, सोमेटोगेमी होती है, प्लाज्मोगेमी होती है, ठीक है। सोमेटोगेमी, दो सोमेटिक हाइफे जो हैं वो फ्यूज कर गए, प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन हुई, लेकिन न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज नहीं किए। तो इफ यू कैन सी थर्ड डायग्राम में क्या होता है, डाइकोरियोटिक हाइफी जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं, दैट इज जो पूरा का पूरा जो माइसीलियम है जो फंगस का वो डाइकैरियोटिक हो जाता है, क्योंकि वो जो सिंगल सेल था जिसमें जब सोमेटोगेमी हुई तो वो जो फ्यूज होने के बाद जो सेल फॉर्म हुआ जिसमें दो न्यूक्लियाई थे वो डिवाइड करते जाता है आगे, और उससे क्या है हाइफी बनते हैं जिनमें हर एक सेल के पास दो न्यूक्लियाई होते हैं। उस डाइकैरियोटिक हाइफे से, उस दो न्यूक्लियाई वाले हाइफे से जो है बेसिडियो कार्प की फॉर्मेशन होती है, जो फ्रूटिंग बॉडी जो मशरूम की हमें विजिबल होती है, जो एडिबल पार्ट, ठीक है। तो उस बेसिडियो कार्प के अंदर क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड डाइकैरियोटिक हाइफे फॉर्म होते हैं जिनके अंदर जो दो न्यूक्लियाई हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। उन दो न्यूक्लियाई के फ्यूज करने के बाद मियोसिस होती है। मियोसिस होने से क्या होता है, उस ब्रांच की, उस बेसिडियो कार्प की जो फंगल ब्रांचेस होती हैं जो बेसिडियो कार्प में प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पे उन ब्रांचेस की टिप पे बेसिडियो कार्प की फॉर्मेशन होती है, जिसके टिप के ऊपर जो है बेसिडियो स्पोर्स फॉर्म होते हैं। वो जो बेसिडियो स्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड हैं, वो फ्यूजन के बाद, दो न्यूक्लियाई फ्यूज होने के बाद, मियोसिस होने के बाद फॉर्म होते हैं, दे आर हैप्लॉइड। एज यू कैन सी in the sixth diagram, meiotic division is taking place, right? Two meiotic divisions take place so that four basidiospores are formed. And ये जो basidiospores हैं ये germinate होकर के क्या form करते हैं, they form mycelia, right? Again, you don't need to memorize it. So these are the smut and the rust. You can see Astilego species, it causes grass smut, that is on grasses. It causes the smut disease. Astilego is responsible for smut disease in grasses. आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज ब्लैक बिकॉज ऑफ द ब्लैक स्पोर्स ऑफ अस्टिलेगो, right? And then we have stem rust of wheat which is caused by Puccinia graminis. Puccinia graminis एक basidiomycete फंगस है जो कि वीट के अंदर रस्ट डिजीज कॉज करती है। जो ब्राउन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वीट की स्टेम के ऊपर, दे आर द स्पोर्स ऑफ Puccinia graminis. Then we have deuteromycetes. Deuteromycetes, they are called imperfect fungi because we only know about the asexual or vegetative phases of these fungi. इनमें जो है sexual reproduction नहीं देखी गई है। Deuteromycetes, they reproduce only by asexual spores, और कौन से asexual spores से reproduce करते हैं ये, Conidia से. Some members are saprophytes or parasites, however a large number of them are decomposers of litter. So they have a major role in mineral cycling. जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे फॉरेस्ट में कहीं पे आप देखते हैं बहुत ज़्यादा लीव्स जो हैं वो नीचे गिरी पड़ी होती हैं, या जो भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उसको रिसाइकिल करने में deuteromycetes have a major role, right? So these deuteromycetes, they are mainly, they are decomposers. Some of them, they are saprophytes or parasites. Some examples are Alternaria, Calitotrichum, Trichoderma. Okay, thank you.